126 for 8 on the board for the Novas, led by Harmanpreet Kaur, of course. She scored 31 of 27. But star of the show was Chamari Athapaththu, a destructive Sri Lankan batsman. She opened the innings along with the Delhiite Priya Punia, 44 of 39 for Chamari Athapaththu, 126 for 8 on the board in the first match. It's been a banging start to the Women's T20 Challenge. With me, of course, I have Atul Paji. अतुल पाजी, कितने खुश हैं आप एक विमेंस टी20 चैलेंज देखकर 2 साल लगातार? देखिए, मैं थोड़ा सा ना इस मामले में आई स्टिक माय नेक आउट, मैं थोड़ा स्केप्टिक हूँ। अच्छा है कि लड़कियां खेल रही हैं क्रिकेट। वर्ल्ड कप में जब इंडिया फाइनल में पहुंची थी इंग्लैंड में, तब से मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा क्रेज हुआ था। अगर जीत जाते तो कुड हैव बीन द टिपिंग पॉइंट जो हम 83 में मेंस के साथ हुआ था। हमने भी क्रिकेट तब शुरू करी, कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता, हमें लगा कि यार इस स्पोर्ट में हम बन सकते, तो वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, माय जनरेशन। तो अगर वर्ल्ड कप जीत जाते हम इंग्लैंड में, उसके बाद इस साल मैं कमेंट्री कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप हो रहा था और इंडिया फिर से फाइनल में हार गया, तो एक ब्लॉक है, पर ये पता लग गया कि वी आर देयर, राइट अप देयर। ये मैच की कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ये ठीक है। मुझे लगता है कि जहां मेंस का पार स्कोर अबाउट 160 165 है, वहां 125, दिस इज एक्सपेक्टेड। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो व्यूअरशिप है एंड द revenue stream, or you can say the profitability, or the success of the women's cricket lies in people actually going to pay and watching it. But जो लोग ये देख चुके हैं छक्के और big hitting and muscle in cricket, उनके लिए बड़ा ना मुश्किल हो जाएगा ये प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करना, if you look at it through the myopic eyes of what you have been watching for men's cricket. तो मुझे लगता है सबको एजुकेट करना जरूरी है कि भाई इसको उसी नजर से मत देखो, इसको उसी नजर से मत कंपेयर करो, you have to see it for what it's worth. और वैसे भी वर्ल्ड कप के बाद लड़कियां कहीं खेली नहीं है, कोविड हो गया फिर उसके बाद, और अगले साल दो बड़े वर्ल्ड कप हैं, 2020 वर्ल्ड कप भी है और 50 ओवर, तो दोनों फॉर्मेट के वर्ल्ड कप हैं। और हमारी टीम अच्छी है, एक शेफाली लड़की है, वो मुझे बहुत इंप्रेस करा उसने, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हर बैट बिकॉज़ शी इज वन ऑफ द लाइक विव रिचर्ड टाइप्स प्लेयर्स वी हैव गॉट। जी बिल्कुल, वो जल्दी देखने को मिलेंगी हमें अगली इनिंग्स में। वीसीटीज में है वो 126 पे 8 बने यहाँ पे, जैसा आपने बोला कि पार स्कोर ऑफ कोर्स इट विल बी लेस फॉर वुमेन। और since you've been associated for so long with DDC also and Indian cricket, क्या लगता है आपको अभी कितना फर्क है विमेंस क्रिकेट की फैसिलिटीज में और मेंस क्रिकेट की? बहुत ज्यादा अंतर है क्या? वो गैप क्लोज हो सकता है आने वाले सालों में? नहीं, फैसिलिटीज में कोई अंतर नहीं। जब से बीसीसीआई ने टेक ओवर किया, लॉटरी लग गई है। मैं तो 20 साल पहले मैंने कमेंट्री शुरू करी थी, जब तब आई रिमेंबर आई डिड कमेंट्री फॉर अंजुम, ये थी मिताली का आई थिंक डेब्यू मैच आई कमेंटेटेड ऑन, many Julan Goswami's debut match I commentated on, then Doordarshan used to carry them, so it was like a charity given to them कि चलो तुम्हारा मैच कवर कर रहे हैं, India playing another country, but it was international match। तो क्या था, पर वो हैंगओवर था मेंस क्रिकेट का, और वो जो ग्लैमर होता है ना वो मेंस क्रिकेट में, चलो इनको सब्सिडाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर वो मेंटालिटी थोड़ी तो चेंज हुई है। एंड आई थिंक बोर्ड इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब कि ये जो आपने ये शोकेस इवेंट करते हो आप, अनलेस आईपीएल फॉर स्पेशली फॉर वुमेन becomes revenue neutral, that means they can generate their own, till that time men have to support it। and मैं डीडीसी में था, वहां पे अंडर 19 अंडर 15 लड़कियों की टीम, अंडर 23, so full setup with coaches, physios, the whole 9 yards, so they were just getting whatever the boys were getting, so that's why you see that the kind of money BCCI is pumping in women's cricket is unbelievable. No other country is doing that except Australia, I think, and England maybe। This is a very good sign actually। और अतुल भाजी, आपको क्या लगता है, in the near future will be able to see a full-fledged women's IPL, or are we still miles away from that? बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लोग ये देखो कि हार्डकोर बिजनेसमैन है, ये ना इसमें कोई एल्ट्यूरिस्टिक व्यू पॉइंट नहीं है कि जी आपने सपोर्ट करना है, ये करना है, वो करना है। इट इज लाइक women's tennis generates more money than men's tennis because people like to watch it। अगर मैं फेडरर को देख रहा हूँ, नडाल को देख रहा हूँ, तो मैं लड़कियों का मैच भी उसी देखो, बिकॉज देयर कॉन्टेस्ट इज देयर। वो क्रिकेट में नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट में हम करेंगे यार बॉल कितनी स्पीड में गई है, वो 110 में, इतने तो स्पिनर करते हैं, यार बॉल छक्का मारा आपने, बॉल भी हल्की है इनकी, तो बॉल मतलब वो अगर उस नजर से देखोगे तो नहीं देख पाओगे। वो अभी तक मुझे लगता है कि हमारी जो हार्डकोर क्रिकेट व्यूइंग वो जो हमारा डेटाबेस है या जो टारगेट ऑडियंस है वो मैच्योर नहीं है इतनी। तो अभी जल्दबाजी मत करना, बिकॉज देन व्हाट हैपेंस, इट विल बी अ फ्लॉप and then you will give it up, so let it mature like what you are doing now, and I am totally for it। don't just push the envelope कि भाई अगर आप बिजनेसमैन से पूछोगे, बोलेगा हाँ मैं कर दे देता हूँ पैसे, मुझे मेंस क्रिकेट में क्या लॉलीपॉप दोगे आप, so he will have always an edge।
on its own to raise revenues will be very hard because वो charity होगी, handout होगा, and that will not be sustainable. जी, और आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं जाने से पहले अतुल बाजी, एक दो तीन नाम ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड व्हिच यू आर रियली एक्साइटेड टू वॉच इन दिस ईयर्स वुमेन्स टी20 चैलेंज. या मेरे तो 3-4 लड़कियां, मैं बिकॉज पहले नाम याद नहीं होता था, मैं झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा, मिताली, अर्लियर गर्ल्स, आई यूज्ड टू वॉच देम, बट नाउ दीस स्मृति मंदाना इज ब्रिलियंट प्लेयर, शी इज गॉट दैट टच, you can see that she is gift, like जो विवेक लक्ष्मण के पास था, या शुभमन गिल की बात करते हो, आप देखते हो ना जो टच होता है, रोहित शर्मा का जो है कि इतना ऐसा लगता है कि बस चाय पी के मार रहा है वो स्मृति मंदाना मुझे लगता है. हरमनप्रीत कौर ब्रिलियंट प्लेयर. ये शेफाली वर्मा, आई थिंक इट्स अ सहवाग का वो है, मोल्ड है. और एंड आल्सो लॉट ऑफ प्लेयर्स, नाम बोल रहा हूं मैं बिकॉज unless I see them more often, but these 3-4 top of my head. And Alice Perry is one cricketer from Australia. She's my favorite cricketer. What a star. जी, वो इस टूर्नामेंट में खेल नहीं रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वहां विमेंस बीबीएल चल रही है. उनकी फुल फ्लेज्ड एस्टैब्लिश हो चुकी है. दे आर फुल ऑन पंप प्राइमिंग देयर टूर्नामेंट. आई थिंक इट्स ब्रिलियंट टू वॉच. यहाँ भी एक दिन ऐसा हो तो we'd love to watch it for sure, but I think it will take time. Good things take time, of course. Atul Baji, it was a pleasure talking to you about women's cricket, of course. Right. I'll see you again. अब तो हम men's कल मिलेंगे. कल बड़ा मैच है. कल है पूरा दूध का दूध, पानी का पानी. जी, सारा दूध सारा पानी. कल पता लग जाएगा कौन चीनी कम कौन चाय ज्यादा. और आपको बता दूं कौन जीत रहा है कल. जी बताइए अतुल बाजी. कल दिल्ली जीत रही है. दिल्ली जीत रही है. ये सर इनसाइड इंफॉर्मेशन है या फिर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं खुद? बस आप मेरे से शर्त लगा लो, कल दिल्ली जीतेगी, आप देख लो. चलो ठीक है. All the viewers have seen what Atul Baji has made us. Atul Baji has made a statement. Let's see if that your prediction comes true or not. We'll see you again. Thank you, Atul Baji. Okay, bye. Delhi is winning according to Atul Baji. Take a note, guys. Bye. Yes. Continuing forward, let me read out to you the best tweets of first innings. Of course, as Atul Baji has left us, I'll be continuing with you. I hope you don't mind. Tweet like nobody is caring says Veda Krishnamurthy is the Faf du Plessis of women's cricket in taking catches. I'd like to correct this. Veda Krishnamurthy is the Veda Krishnamurthy of taking catches. Why do we need a men's template to compare to the women's game? We say Harmanpreet Kaur is the Virat Kohli of women's cricket. There, she's Harmanpreet Kaur. Veda Krishnamurthy is Veda Krishnamurthy. She's not Faf du Plessis. She's not anyone else. She's herself. And if we stop looking at people from the lens of gender, from the myopic lens of gender, then probably we'll recognize people for who they are and not for who they should be compared to. Second tweet is by Hypocast. Jahanara Alam once again proving her worth at this level, dismissing both Athapaththu and Kaur. We already knew the worth of Jahanara Alam, how good she is in this format. She's got pace, she's rapid, and she's proved once again for sure. And quickly moving on to the scorecard now. Novas batting first, getting to 126 for 8. Priya Punia opening the innings, facing the first ball, 11 of 15, 2 boundaries for her. Chamari Athapaththu, star of the show, 44 of 39. We already knew how good she can be, and she displayed that at the top level again. 2 boundaries and a 6 for her. Jemima Rodriguez got out while sweeping to Ekta Bisht. Really loopy, really flighted delivery, flighted over the eye line of Jemima. She got out for 7 with a boundary. Harmanpreet Kaur got going but couldn't continue till the fag end of the innings. 31 of 27, 2 towering sixes and a 4 for her. Shashikala Sirivardhan, a decent innings, supported Harmanpreet Kaur amply. 18 of 21 before she got run out. Pooja Vastrakar, a duck for her. Radha Yadav, not much of a batsman. Shakira Salman also got out for 5. Tanya Bhatia didn't get much of a chance with the bat, didn't trouble the scorers at all as she didn't get to face a ball. VCITY's bowling card looks really good. 4 overs, 18 for none for Shikha Pandey, who opened the bowling. Jahanara Alam, again, as we talked about her, displayed what she's capable of. 4 overs, 27, a couple of wickets, really important wickets for her. She got Chamari Athapaththu and Harmanpreet Kaur out. Probably the most important wickets in this lineup. Ekta Bisht, 4 overs, 22, 3 wickets. She was as good as ever. We've always known what she's capable of. And again, she's portrayed that.
Lee Kasparik, 4 overs 23 for 2. Almost everyone doing a fine job with ball in hand. Manali Dakshini, 3 overs 23, a bit expensive. Soon Lu, also expensive, 1 over. The sole over for her conceded 11 runs. 126 for 8 at the mid innings break. Can we cities chase this down, or can Novas defend this and continue their good run in this tournament? We'll have to wait and watch. But the action is not over yet. We'll come back with all the analysis after the second innings to bring you the review of this match. So keep watching Sports Tiger. Enjoy the second innings. We'll come back after this match.